हाँ, क्या चल रहा है? कब तक मेरा काम होता है? रिलेशंस का क्वेश्चन चालू है अभी। हो गया। हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो करा रहे हो तो डालना पड़ेगा कुछ तो एंड पे। So if we want to say that a given relation is a function, it should satisfy two condition, है ना? आपके पास दो सेट है, ए है, बी है. So there are elements inside the set A, B के अंदर भी elements है. So if we want to say that a relation is a function, it should satisfy two condition. That means condition is like this: every element of set A should have one and only one image in set B. इसमें दो कंडीशन मेंशन किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए का सबको चाहिए. कितना चाहिए? 1 चाहिए. सो दो कंडीशन इन दिस स्टेटमेंट में, दो कंडीशन है. Every element of set A should have one and only one image in set B. So elements of set B का नाम क्या आएगा? Image आएगा. Element of set A का नाम क्या आएगा? Pre-image आएगा. So if this condition is satisfied, then only we can say that the given relation is a function. So there are different types of function. Basically, one क्या है?
1 to 1, 1 to 1 और 1 1, 1 to 1 और 1 1 भी बोल सकते हैं, और हाँ 1 to 1 उसका नाम है, 1 to 1 नहीं तो many to 1. That means from the side of set A, we have to see whether this is 1 to 1 or many to 1. If you see from the side of set B, we can say that whether it is on to or into. Okay. So if a graph is given, how to find out whether this relation is function or not? If a graph is given, how to find out the given relation is a function or not? Vertical line test use करना है. If it touches at only one point, then we can say that it is a function. Otherwise, it is simply a relation. Okay. So function can be classified into 1 to 1 or 1 1. इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन. सही है ना? इंजेक्टिव फंक्शन. इसमें क्या कंडीशन आना चाहिए? Every element of set A should be connected to, that means every element of set A should have separate image on set B. That is the condition for 1 to 1. Then second क्या है? इसका 1 to 1 नहीं तो क्या आएगा? Many to 1 आएगा. Many to 1 आएगा. Then दूसरा टाइप क्या है? On to function. On to function का दूसरा नाम क्या आएगा? सर्जेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव फंक्शन. On to नहीं तो क्या आएगा? Into फंक्शन आएगा. So 1 to 1 or 1 1 or injective means every element of set A is having separate image on set B, that is 1 to 1. ये violate किया तो क्या आएगा? Many to 1 आएगा. On to function means और surjective function है, इसका meaning क्या है? set B का पूरा elements को कुछ तो pre image होना चाहिए. set B से देखा तो A में कुछ तो pre image होना चाहिए. That condition satisfy किया तो क्या आएगा? On to function. नहीं तो क्या आएगा? Into function. So 1 to 1 it is violate किया तो many to 1 है. On to का condition को violate किया तो क्या आएगा? Into function आएगा. For example, इधर आपको एक क्वेश्चन दिया है. Function defined from n to n. N being natural number. Such a way that function is mapped from n to n, such a way that f of x is equal to 2x. इसमें then f is option 1 1 on 2, option B 1 1 into 1 1 into, option C many 1 on 2, many 1 on 2, option D many 1 into.
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन किया है ना. So set A क्या आएगा 1 2 3 4 up to infinity. Set B is also from 1 to 3 up to infinity. So whether it is which type of function, 1 1 many 1, 1 1 नहीं तो many 1 आएगा, on to नहीं तो into आएगा. So which type of function है? Y equal to 2x है ना. Y equal to 2x is our function. So हर एक वैल्यू को अलग अलग मिलेगा. That means it is 1 to 1 और 1 1 function. So 1 1 आएगा, many to 1 नहीं आएगा. So आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? 1 1 आएगा, ये भी 1 1 आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा. सही है ना. Then we have to decide whether it is on to or into. क्या आएगा? On to कैसे आएगा? So can you say that इमेज इक्वल टू प्री इमेज नहीं है. सेट बी का सब आदमी को कुछ तो प्री इमेज होना चाहिए. सही है ना. सो सबको मिलेगा. देखो सेट ए क्या है. सेट ए मींस 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाएगा ना. सेट बी क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाएगा. सो इफ यू कंसिडर y इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो कहाँ आएगा? ये मिलेगा. 2 पर आएगा ना. 2 को पुट किया तो क्या आएगा? 4 आएगा. 3 को पुट किया तो क्या आएगा? 6 आएगा. 4 को पुट किया तो 8 आएगा. बट 1 को कोई कनेक्शन नहीं है. So if you want to finalize whether many to 1 or 1 to 1, सेट ए का साइड से देखना है. सेट ए का सब आदमी को अलग अलग कनेक्शन है तो 1 to 1. किसी एक आदमी ने वायलेट किया, 2 लोगों को एक कनेक्शन है, 2 लोगों को एक कनेक्शन है तो वो क्या आएगा? मेनी टू 1 आएगा. सेट बी से साइड से देखना है, सबको कनेक्शन है, कुछ तो इमेज प्री इमेज है उधर. देन वी कैन से दैट इट इज ऑन टू. किसी को नहीं है, इसको क्या आएगा? इनटू आएगा. तो इधर देखो इन सेट बी 1 को नहीं है. वी नीड टू क्लैरिफाई ओनली फॉर एनी वन एलिमेंट. 1 को कोई प्री इमेज नहीं है, 2 को है, 3 को नहीं है, 4 को है, 5 को नहीं है. दैट मीन्स सेट बी का पूरा एलिमेंट्स को प्री इमेज, सबको प्री इमेज नहीं है. सबको प्री इमेज अवेलेबल है तो देन ओनली वी कैन से दैट इट इज ऑन टू. अदरवाइज ये क्या आएगा? इनटू आएगा. सही है ना. सो विच ऑप्शन? 1 1 एंड इनटू आएगा. सो ये भी नहीं आएगा. Then next, that means this is depending on the set A and set B. Set A and set B. Next question देखो. A function is defined R to R. A function is defined or mapped from R to R such a way that f of x is equal to x square. F of x is equal to x square. Function f is क्या आएगा? ऑप्शन ए 1 1 1 1 on to. ऑप्शन बी 1 1 into 1 1 into. ऑप्शन सी many 1 on to. many 1 on to. ऑप्शन डी many 1 into. many 1 into. क्या है फंक्शन? many 1 आएगा. x इज इक्वल टू -1 को भी +1 आएगा, x इज इक्वल टू +1 को भी +1 आएगा. सो many 1 पक्का many 1 आएगा. सो ये आएगा, ये आने का 2 चांस है, ये कट कर सकते हैं. देन many 1 into. दैट मीन्स इधर रियल नंबर टू रियल नंबर है ना.
रियल नंबर टू रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आएगा। सो इफ यू कंसिडर -2 -1 माइनस, है ना, बीच में भी वैल्यू है, 0 1 2 आएगा। सो -1, देखो, 1 को कुछ, 0 को कुछ तो कनेक्शन मिलेगा इधर, 1 को कनेक्शन मिलेगा, 2 को भी कनेक्शन मिलेगा, किसी को कनेक्शन मिलेगा, बट पीछे वाला नेगेटिव है ना, वो किसी का इमेज नहीं आएगा। -1 -2, दैट इज नेगेटिव नंबर को कोई कनेक्शन, कोई प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स ऑन टू का कंडीशन वायलेट किया है, सो वी कैन नॉट गो फॉर ऑन टू। सो मेनी वन एंड इन टू आएगा, मेनी वन एंड इन। अभी देखो, एफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इधर ऑल्सो एफ मैप्ड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ ऑफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्या आएगा बोलो? 1 1 आएगा, बिकॉज क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो 1 1 आएगा। इंटू, देखो, इंटू आएगा, ऑन टू आएगा। ये रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर है। -1 का है तो -1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, -2 है तो -8 मिलेगा। दैट मीन्स सेट बी का सबको कुछ तो प्री इमेज है, कुछ तो प्री इमेज है। सो क्या आएगा? ये ऑन टू आएगा। 1 1 ऑल्सो, ऑन टू ऑल्सो। At the same time, simultaneously, if the given function is 1 1 and on 2, इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 to 1 means injective, on to means surjective, 1 1 also, on to also, that means injective also, surjective also, same time. Then we can call it as bijective function. Only for bijective function we will be able to calculate inverse. So, if we want to say that for a given function inverse exists or not, the function should be bijective. Then otherwise we cannot calculate inverse for the given function. So here 1 1 also, on 2 also. That means 1 1 means क्या आएगा? इंजेक्टिव आएगा। on to means क्या आएगा? सर्जेक्टिव आएगा। दोनों मिला के both are happening simultaneously, then we will say that it is bijective function. Only for bijective function inverse will exist. The next question देखो, let C and R denote, let C and R denote the sets of all complex numbers. All complex numbers and all real numbers respectively. Let C and R be the denote the sets of all complex numbers and all real numbers respectively. A function is defined in such a way that f is equal to, mapping कहाँ से कहाँ तक किया? Complex number से real number तक किया, and defined like that f of z is equal to mod z. F of z is equal to mod z. Then we have to say whether it is 1 1 on 2, many one on into. C क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। R क्या आएगा?
रियल नंबर। सो सी से आर आर में रिलेट किया है। सो सी में कौन कौन आएगा? पूरा आयोटा भी टाइम आएगा, सही है ना? ऑल पॉसिबल आयोटा भी आएगा, है ना? 3+2 आयोटा, 3-2 आयोटा, आयोटा 1 - आयोटा सब आएगा। आर में ओनली क्या आएगा? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी का आएगा। बोलो क्या आएगा? फंक्शन कैसे? एफ ऑफ एस डिफाइंड एज मोड जेड। मोड जेड हमेशा क्या है? पॉजिटिव नंबर, सही है ना? देन फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर सी इक्वल टू 3+2 आयोटा, इसका मोड क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 3+4 आयोटा, फॉर इजनेस 3+4 आयोटा, उसका मोड 5 आएगा। इफ यू कंसिडर सी का एक वैल्यू 3-4 आयोटा, उसका भी मोड क्या आएगा? 5 आएगा। दैट मीन 3+4 आयोटा को भी इमेज क्या है? 5 है। 3-4 आयोटा का भी इमेज क्या है? 5 है। दैट मीन्स दे आर, दिस फंक्शन इज मेनी टू वन। देन सो 1 to 1 नहीं है, मेनी टू वन है। देन वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज 1 ऑन टू और इन टू। ये सी है, ये आर है, ऑन टू नहीं आएगा, इन टू आएगा ना। आर में क्या है ना, मोड जेड हमेशा पॉजिटिव है, सेट बी में नेगेटिव भी है, सही है ना? तो 0, 1, 2 उसको वैल्यू मिलेगा। -1, -2 है ना, सच नेगेटिव नंबर कैनॉट बी ए मॉडुलस, बिकॉज मोड जेड हमेशा पॉजिटिव है। सो -1, -2 -3 को कुछ तो प्री इमेज नहीं है। सो ऑन टू नहीं है, क्या आएगा? इन टू आएगा। एंड हियर फॉर एग्जाम्पल 3+4 आयोटा एंड 3-4 आयोटा का दोनों का क्या आएगा? 5 आएगा। दोनों का इमेज क्या है? 5 है। सो ये मेनी टू वन है एंड इन टू, मेनी टू वन एंड इन टू। वन मोर क्वेश्चन देखो, a function is defined in such a way that from n to n mapping is done from n to n. So function is mapped from n to n and defined in such a way that f of n equal to, that means f of x is equal to n square plus n plus 1, n square plus n plus 1. The function is, आपको बोलना पड़ेगा क्या है? मेनी टू वन है, 1 to 1 है, ऑन टू है, इन टू है। मैपिंग इज डन फ्रॉम n to n. n to n, n में क्या आएगा? 1, 2, 3 सब आएगा ना, ये भी 1, 2, 3 सब आएगा। 1, 1 आएगा, 1 को डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, 2 को डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। सो हर एक को अलग 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 इमेज है। सो 1, 1 फंक्शन आएगा। ऑन टू और इन टू, इन टू है, बिकॉज इफ यू कंसिडर 1, 1 आएगा, 2 किसी का नहीं आएगा ना। हाँ, तो एटलीस्ट 1 बंदे ने वायलेट किया तो क्या आएगा? दैट मीन्स इधर इफ यू पुट n इक्वल टू 0, पुट किया तो f of 0 क्या आएगा? 1 आएगा। बट if you put f equal n equal to 1 means f of 1 क्या आएगा? 1 + 1 + 1 आएगा, दैट मीन्स 3 आएगा। दैट मीन्स 2 को कुछ तो कनेक्शन नहीं है। सो ये क्या आएगा? इनटू आएगा। 1, 1 एंड इनटू आएगा। नेक्स्ट देखो,
सेट ए इज डिफाइंड एज r माइनस 3, पूरा रियल नंबर कंसिडर करना है, उसमें से द वैल्यू 3 कट करना है. एंड बी इज डिफाइंड एज r माइनस 1, पूरा रियल नंबर कंसिडर करना है, उसमें से 1 कट करना है. So that is your set A and set B. And function is defined in such a way that mapping is done from A to B, and definition is f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. X minus 2 upon x minus 3. Whether it is 1 to 1, many to 1, on to or into. क्या आएगा? 1 1 है, बिकॉज सेट ए में 3 नहीं है ना, सेट ए में 3 नहीं है, पूरा रियल नंबर है, उसमें 3 नहीं है. सो इधर हमारा फंक्शन क्या दिया है? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 है ना. x कैनॉट बी इक्वल टू 3, x कैनॉट बी इक्वल टू 3, बट हमारा सेट ए में ए 3 भी नहीं है. सो बाकी सबको कुछ तो मिलेगा, दैट मीन्स हर एक को अलग अलग मिलेगा. सो ये क्या आएगा? 1 1 आएगा. देन रेंज क्या आएगा? सेट बी में कौन है? पूरा रियल नंबर है, उसमें से किसको कट करना है? 1 को कट करना है. सही है ना. y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 है, तो वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ना. दैट मीन्स वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2. That means x into y minus 1 equal to 3y minus 2. X is equal to 3y minus 2 upon y minus 1. So what is the possible value of y? Cross multiply किया मैंने. y equal to x minus 2 upon x minus 3. So yx minus 3y equal to x minus 2. So yx minus x, x के साथ, हाँ, इधर y cannot be equal to 1 है ना. y cannot be equal to 1. That means set b में r minus 1 है. So set b का सबको r minus 1 कट किया तो except 1, बाकी सब y को कुछ तो प्री इमेज आपको मिलेगा. That means this is on to also. सही है ना. 1 1 also on to also. This function क्या है? बाइजेक्टिव आएगा, बाइजेक्टिव आएगा. Then next question देखो. Let r plus be the set of all positive real numbers. Let r plus be the set of all positive real numbers. Then function is defined from r plus to r plus. Mapping is done from r plus to r plus. And defined in such a way that f of x is equal to e raised to x. r plus means क्या आएगा? हाँ, except 0, 0 का आगे, that is r plus, positive real numbers. So set A, B, set A, set B, set B, A also r plus है, set B also r plus है. R plus means बट R plus में कुछ 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 वैल्यू डाल सकते हैं ना. 0.1 भी डाल सकते हैं ना. x इक्वल टू 0.1 डाल सकते हैं, 0.001 डाल सकते हैं. सो
क्या आएगा बोलो? ई रेज टू वन है तो ई आएगा ना, बट इस ई रेज टू वन के आगे है तो 1.5 ऐसा आएगा तो क्या आएगा? ई के बड़ा आ जाएगा, वैल्यू विल बी ना ग्रेटर देन, दिस विल बी ग्रेटर देन ई, ई रेज टू वन इक्वल टू ई रेज टू 0.5 है तो क्या आएगा? लेस देन ई, लेस देन ई आएगा. दैट मीन्स यू कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना. ई का लेस देन है तो क्या आएगा? 2 के छोटा हो जाएगा, 2.718 है ना ई का वैल्यू. सो लेस होके कितना तक जाएगा? ग्रेटर देन 0 तक आएगा ना. सो ये क्या आएगा? 1 to 1 आएगा. फंक्शन क्या आएगा? 1 to 1. इसमें पूरा आर प्लस में क्या आएगा? 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है ना, 0.00000, देन इंफिनिटी तक जा सकते हैं. इधर ऑल्सो 0.00001 टू इंफिनिटी तक जा सकते हैं. दैट मीन्स इधर e रेज टू 1 पुट किया तो e मिलेगा, e रेज टू 1 इसका वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या आएगा? लेस देन e आएगा. बट e रेज टू दिस वैल्यू विल बी लेस देन e, बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है. e raised to 1 का आगे क्या तो क्या आएगा? It will always greater than e है. That means you will be able to see the values, है ना. क्या आएगा? 0 से बड़ा वैल्यू आपको हमेशा मिल जाएगा. e raised to ये x है ना, x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 से बड़ा है. सो ये क्या आएगा? 1 1 फंक्शन आएगा. Whether it is on to or into, on to रहेगा. सो ये क्या आएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन है. e raised to x का ग्राफ कैसे है? ऐसा है ना. This is a graph of e raised to x. So this part we no need to consider. सही है ना. This part we don't need to consider. This part consider करना है. How to check whether the given function is, given graph is on to 1 1 or many 1. वो function को check करने के लिए, if we want to test whether the given relation is a function or not, vertical line test मारना है. If we want to check whether the given function is 1 1 or many to 1, आपको क्या लेना है? horizontal line में. horizontal line में only one intersecting point है तो क्या आएगा? 1 1 function आएगा. Then a function is defined from minus pi by 2 to plus pi by 2 to minus 1 to plus 1. सेट ए क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है. सेट बी क्या है? -1 to +1 है. एंड फंक्शन इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट f of x is equal to sin x. f of x is equal to sin x. 1 1 आएगा, on to भी आएगा, है ना. sin x का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है ना. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री normally for a trigonometric function, inverse does not exist because it is not bijective. But when you consider restricted domain, you will be able to say that from this to this we can consider inverse of for a trigonometric function. For sine, minus pi by 2 to plus pi by 2 is the restricted domain. So ये 1 1 भी आएगा, on 2 भी आएगा. Then f equal to r to r. R to R. Mapping is done from R to R.
and f of x is equal to cos x. F of x is equal to cos x. Whether it is 1, 1, many to 1, on to, into. 1, 1 नहीं देखो R to R है. R to R है. R to R. देखो cos 0 क्या है? 1. Cos 180 क्या है? Cos 360 क्या है? 1. So cos 0 को भी 1 मिला, cos 360 को भी 1 मिला. सही है ना? So देखो साइन का ग्राफ देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देखो कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. More than one. That means if you draw vertical line, test only for checking whether the given relation is function or not. Once you confirmed it is a function, then to check whether it is 1, 1 or many to 1, we can use horizontal line test. It is intersecting more than 1 point, it is many to 1. So many to 1 आएगा. Then on to or into, R में क्या आएगा? सेट R में क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आएगा. सही है ना? बट कोस का रेंज क्या है? -1 टू +1. सबको प्री इमेज नहीं मिलेगा. सो ये क्या आएगा? इनटू आएगा. सो इनटू है, मेनी टू 1 है. From the side of set A, you have to see whether it is, in order to check whether it is many to 1 or 1 to 1. From the side of A, we have to observe. From the side of B, we have to observe when we want to differentiate between on to or into. Next one, a function is defined from Q to Q. Q means, Q क्या है? N for natural number, W for whole number, Z for integer, Q for rational number. So rational number to rational number defined किया है. F of x is equal to 3x plus 5. Then F inverse x. F inverse x का वैल्यू बोलना है. ऑप्शन A 3x minus 5. ऑप्शन B 1 upon 3x minus 5. ऑप्शन B 1 by 3 into x minus 5. ऑप्शन D none of this. क्या आएगा? C वाला आएगा है ना. y equal to 3x plus 5. So y minus 5. हाँ, y equal to 3x plus 5 है ना. So y minus 5 equal to 3x आएगा. That means x is equal to y minus 5 by 3. But normally when you represent a function, the variable should be in terms of x. So इधर x के जगह पे y डालना है, y के जगह पे x डालना है. So x minus 5 by 3. So 1 by 3 into x minus 5. The next one, f of x is equal to x square minus 1. G of x is equal to 3x plus 1. Then what is g of f of x? F of x is x square minus 1. G of x is 3x plus 1. X square minus 1. F of x, g of x क्या है? 3x plus 1. And g of f of x. Composite function. Option A 9x square plus 6x. Option B 3x square minus 1. Option C 2x square minus 1. Option D 3x square minus 2. Three x square minus 2.
जैसे सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। सो अभी नया इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो जी ऑफ एक्स में कहाँ पे एक्स है, वहां आपको क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करना है। सो जी ऑफ एक्स क्या आएगा, 3 × एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो 3x² -3 + 1 क्या आएगा, 3x² -2 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन g ऑफ f ऑफ -5/3, g ऑफ f ऑफ -5/3 माइनस f ऑफ g ऑफ -5/3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1/2। सो डेफिनेशन should be well known. Answer is 1. हाँ, first if you consider g of f of -5/3, that means f of -5/3 क्या आएगा, देखो, हाँ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट मीन्स -1 पॉइंट समथिंग है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, देखो, -2 से -1, -2 से -1, सो हमारा वाली क्या है, इधर है ना, -2 आएगा। सो -2 का, सो -2 हमको मिला, f ऑफ -5/3 -2, वो g ऑफ x में डालेगा तो क्या आएगा, +2 आएगा। देन उल्टा किया तो g ऑफ -5/3 क्या आएगा, -5/3 का 5/3 1 पॉइंट समथिंग है ना, उसका मॉडुलस है तो प्लस आएगा, उसका 1 आएगा। सो f ऑफ g ऑफ -5/3 मीन्स 1 आएगा, सो 2 - 1 1 आएगा, सही है ना। देन f of x is equal to 1/1 minus x. That what is f of x? F of x is equal to 1/1 minus x. What is f of x? Option A, x by 1 minus 3x. Option B, 1 by 1 minus 3x. Option C, x. Option D, none of this.
मिला? एक्स सही है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है बार बार बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज given as x square plus 1 by x square, then what is f of x? x square? नहीं नहीं, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू। एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस टू आएगा। We have to think how to write x square plus 1 by x square in terms of x plus 1 by x. F of x plus 1 by x equal to x square plus 1 by x square है ना? That can be written as x plus 1 by x the whole square minus 2. So f of x plus 1 by x is x plus 1 by x the whole square minus 2 means f of x क्या आएगा? x square minus 2 है ना? इधर हमने क्या किया? x plus 1 by x पुट किया तो o वैल्यू का स्क्वायर है माइनस 2. हाँ, x square minus 2. So f of x become x square minus 2. हाँ, रिप्लेस करना है ना? f of x is equal to x square minus 2. Then f of x plus 1 by x पूछा है तो क्या आएगा? We have to replace x with x plus 1 by x. इधर क्या किया? रिवर्स किया. f is given as 1 2 3 5 4 1 and g is given as 2 3 5 1 1 3 5 1 1 3. Then you have to calculate g of f. फर्स्ट इनपुट क्या है? f है ना? सो f में पहले क्या पुट करना है? 1 पुट करना है. सो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा. 2 पुट किया तो g क्या देगा? 3 देगा. सो 1 पुट किया पहले, फाइनली क्या मिला? 3 मिला. समझा? सो 1,3 आएगा. 3 पुट किया तो g ऑफ f मीन्स पहले वाला f है, बाद में g को देना है ना? सो f को 3 दिया हो, 3 दिया तो f क्या देगा? 5 देगा. 5 दिया तो g क्या देगा? 1 देगा. सो क्या मिलेगा? 3,1 3,1. देन 4 दिया तो 1 मिलेगा. 1 दिया तो 3 मिलेगा. दैट मीन्स 4,5 4,3. सही है ना? सो 1,3 3,1 4,3 इज द आंसर. क्लियर? डोमेन बोलना है. f of x is equal to अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन ऑप्शन ए
-3 to 3. सही है. Because the value should be, है ना, square root. We can calculate square root of a positive number, 0 or positive number. So 9 minus x square का value greater than or equal to 0 आना चाहिए. वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू बिटवीन शुड बी -3 and +3. ओके, नेक्स्ट वन, f of x is equal to under root of x minus 1 upon x minus 4. Then what is the domain? F of x is equal to x minus 1 upon x minus 4. Option. Okay. One to infinity. 4 to infinity. My C option, minus infinity to -1 or 4 to infinity. इधर ऑप्शन में ऐसा दिया है, सो डाउट नहीं आना चाहिए. देखो 1 इंफिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ऑप्शन में ऐसा दिया है, 4 में एक ए वाला ब्रैकेट दिया है, इधर उल्टा किया है. उल्टा किया मतलब क्या है? ओपन इंटरवल. सही है ना, ओपन ब्रैकेट. बी में क्या दिया है? माइनस इंफिनिटी टू -1, इधर एक ओपन, इधर क्लोज्ड यूनियन. 4 में ओपन इंफिनिटी ओपन. डी में नन ऑफ दिस. सर्कुलर ब्रैकेट को circular, instead of giving circular bracket, we can consider like this also in one side. Answer 107. Answer is C. Option C is the answer. देखो डिनोमिनेटर, देखो x minus 1 by x minus 4 है ना अंदर, that should be greater than or equal to 0. x minus 1 upon x minus 4 should be greater than or equal to 0. So इसमें वेविकर मेथड यूज करके, then f of x is equal to 3 into e raised to under root of x square minus 1 into log x minus 1. देन इसका डोमेन बोलना है. ऑप्शन ए माइनस इंफिनिटी टू +1. ऑप्शन बी -1 प्लस इंफिनिटी. ऑप्शन सी 1 इंफिनिटी. ऑप्शन डी माइनस इंफिनिटी -1 और 1 इंफिनिटी. 108. इधर दो कंडीशन. एक बार आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए फंक्शन के बारे, स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में सोचना है, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में भी सोचना है. लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कौन सा है? सी 1 to infinity. सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? x square minus 1 should be greater than or equal to 0 है ना. x square minus 1 should be greater than or equal to 0. उसमें से आपको क्या मिलेगा? x plus 1 into x minus 1 greater than or equal to 0. So -1 to +1. Then x log क्या है? x minus 1. X minus 1 should be greater than 0. X should be greater than
x should be greater than 1 आएगा, सही है ना? से 1 से इंफिनिटी तक, दैट मीन्स इधर क्या दिया है, तो ओपन इंटरवल है ना, सो 1 इंक्लूड नहीं करना है अप टू इंफिनिटी। f of x is equal to 1 upon log 1 minus x to the base 10 plus under root of x plus 2। इसका डोमेन ऑप्शन ए माइनस इंफिनिटी 1, उसमें से 0 कट करना है। सो ओके, ऑप्शन बी कहाँ, फिर ब्रैकेट दिया है माइनस इंफिनिटी प्लस 1 माइनस 0, इसके बाद यूनियन किया, इसके साथ यूनियन किया, ऑप्शन बी -2 इंफिनिटी -0। ठीक है, ठीक। सो इसका डोमेन क्या आएगा, f of x is equal to 1 by log 1 minus to the base 10 plus under root of x plus 2। Logarithm of positive number only defined, so we have to write log 1 minus x to the base 10 cannot be 0. That is one restriction, because logarithm ka, at the same time rational function ka denominator cannot be equal to 0. So log 1 minus x to the base 10 cannot be equal to 0. Then second restriction क्या आएगा, 1 minus x should be greater than 0. Logarithm of negative number we cannot calculate. So 1 minus log 1 minus x 0 कब आएगा, when x is 1, whatever be the value of base, if the argument is 1, the value of the function will be 0. One minus x greater than 0 means 1 is and x is greater than 1. X is greater than 1. So 1 minus if, so here 1 minus x should be equal to 1. That means, because then only we will get the value of the logarithm equal to 0. So 1 minus x cannot be equal to 1 means क्या आएगा, 1 what cannot be 1 means 1 1 कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x 0 आएगा। That means x cannot be 0. X cannot be 0 and x should be
less than 1. That is the one condition for the logarithm part. X should not be equal to 0, but x should be less than 1. That means from minus infinity to plus 1 तक आपको जा सकते हैं, but इसमें से आपको 0 को कट करना है. Minus x should not be equal to 0 and x should be less than 1 means minus infinity से plus 1 तक जा सकते हैं, but उसमें से 0 कट करना है. Then x plus 2 square root function, x plus 2 should be greater than or equal to 0. That means x should be greater than or equal to minus 2. So by merging these two conditions, by merging this condition also, we can say that minus 2 से plus 1 तक, minus 2 से plus 1, minus 2 में closed bracket है, 1 में open bracket है, minus 0. By merging the conditions provided by logarithmic function and square root function, you will be able to get the two terms. So by combining both the condition, we will be able to get that minus 2 to 1 minus 0. So option will be, option C is the answer. Option C is the correct answer. Next question. F of x is equal to log 1 minus x plus under root of x square minus 1. F of x is equal to log 1 minus x plus under root of x square minus 1. Option A, 1 infinity. Option B, minus infinity minus 1. Option C, minus 1 plus 1. Option D, 0, 1. So either here it is open, here also open, here also open, here closed, here open, here open, here open, here closed. So if you, instead of like this, you can represent like this also. This is also open interval, this is also open interval. So f of x is equal to log 1 minus x plus under root of x square minus 1. So how to find out the domain? First condition is 1 minus x is greater than 0. That is the condition given by a logarithmic function. Condition provided by a logarithmic function. 1 minus x should be greater than 0. That means x is greater than 1. X is less than 1. Less than 1 means इसका final क्या आएगा? Minus infinity से plus 1 तक. Minus infinity से plus 1 तक. Second condition क्या है? X square minus 1. This is for logarithmic. X square minus 1. Under root of x square minus 1. So इसमें आपको क्या मिलेगा? X square minus 1 should be greater than or equal to 0. X square minus 1 greater than or equal to 0 means x square is greater than or equal to 1 means, or that means x is greater than 1 or x is less than minus 1. So इसका क्या आएगा? Minus infinity से minus 1 तक और plus 1 से plus infinity तक. अभी दो कंडीशन मिला, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है. दोनों मर्ज किया तो क्या आएगा? दोनों मर्ज किया तो that means merging means in this restriction also we have to satisfy, this restriction also we have to satisfy. So a common agreement आना चाहिए. So we will be getting the answer minus 2 to plus 1 minus 2 minus infinity to minus 1 put करना है. Minus infinity to, because 1 and minus 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है. So minus 1 to minus 1.
सो -1 के जगह पे क्लोज्ड इंटरवल, -∞ के जगह पे ओपन इंटरवल. So -∞ to -1. So option B will be the answer. Option B. -∞ to -1. So first of all logarithm का condition हमने put किया, then square root का condition put किया. दोनों का terms and conditions commonly agree करना है. इसके लिए -∞ to +1, इधर -∞ to -1 और 1 to +∞. So दोनों का common area कहाँ पे आएगा? -∞ to -1. F of x is equal to 1 by 2x minus 1 minus under root of 1 minus x square. F of x is equal to 1 by under root of 2x minus 1 minus under root of 1 minus x square. Then domain calculate करना है. Option A दिया है 1 by 2 1. Option B -1 plus infinity. Option C 1 2 plus infinity. Option D none. So इधर फर्स्ट का कंडीशन देखना है. फर्स्ट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन at the same time rational function. So 2x minus 1 should be greater than 0. Square root है तो greater than or equal to 0 आएगा. Rational है तो denominator cannot be 0. Therefore 2x minus 1 should be greater than 0. So 2x minus 1 greater than 0 means x is greater than 1 by 2 आएगा. That is the restriction given by first one. Second क्या है? 1 minus x square. 1 minus x square. That means square root of a function that should be always greater than or equal to 0. So 1 is greater than or equal to x square. That means x square is less than 1. X square less than 1 means the value b is between -1 to +1. So these are the two restrictions given by both the function. X should be greater than 1 by 2 and x should be less than between -1 to +1. So दोनों का कॉमन एरिया कहाँ पे आएगा? दोनों का कॉमन एरिया 1 by 2 का बड़ा होना चाहिए एंड 1 तक. दैट मींस 1 by 2 to 1. 1 by 2 का साइड में आपको ओपन इंटरवल डालना है. 1 के जगह पे आपको क्या डालना है? क्लोज्ड इंटरवल डालना है. सो कितना फंक्शन है गिवन क्वेश्चन में, उतना सारों का कंडीशन सेटिस्फाई करके एक कॉमन डोमेन आपको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x is equal to sin inverse 2x. f of x is equal to sin inverse 2x. इसका डोमेन कैलकुलेट करना है. So f of x is equal to sin inverse x. That is defined because we know the trigonometric function f of x is equal to sin inverse x defined only when x is between -1 to +1. So either instead of x we are getting 2x. So you have to write we have to write 2x belongs to -1 to +1. That means x belongs to -1 by 2 to +1 by 2. So this is the domain. For a normal inverse trigonometric function, sin inverse x is defined only from -1 to +1. So here instead of x we have 2x. So 2x should be
between -1 to +1. Therefore, x is between -1/2 to +1/2. Next one. F of x is equal to sin inverse x by x. Then you have to calculate the domain of this one. So here we have two functions. One is inverse trigonometry and another one is rational function. For rational function, denominator cannot be equal to 0. So x cannot be equal to 0. And for inverse trigonometric sin inverse function, x ka value should be between -1 to +1. So domain क्या आएगा? By combining both the agreements, -1 to +1 के बीच में है 0. So -1 to +1 आपको लेना है, उसमें से 0 को कट करना है. -1 to +1 ले लो, उसमें से 0 को कट करो. That is the domain of sin inverse x by x. Then next question. F of x is equal to cos inverse x by greatest integer function x. Greatest integer function x. Either you have to calculate the domain. A is option A, -1 to 0. Union 1. Option B, -1 to 0. Option C, -1 to +1. Option D, none of this. So here we have the inverse trigonometry also, rational function also. So rational function matlab mod x cannot be equal to 0. Greatest integer function cannot be equal to 0. So 0 kab aayega? When the value is from including, okay, including 0 to 0.999. That means we can consider like this. Zero to 1 तक, closed interval 0 up to 1 तक है तो क्या आएगा? Greatest integer का function. When we get a value from 0 to 1, greatest integer का function value क्या आएगा? 0 आएगा. So that cannot be 0, means x cannot be element of 0 to 1. X cannot be element of 0 to 1. Then cos inverse x का restriction क्या है? Cos inverse x का restriction क्या है? It cannot be from -1 to +1. It should be from -1 to +1. That is the restriction of cos inverse x. X belongs to -1 to +1. अब ये दोनों एग्रीमेंट को कंसिडर करना है. सो फाइनल x क्या आएगा? दोनों कंसिडर किया तो ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है. So x cannot be equal from 0 to 1. So we can consider -1 to 0. 0 में ओपन इंटरवल डालना है, -1 में क्लोज्ड इंटरवल डालना है. So -1 to 0. But इधर 1 included है, इधर 1 included है, इधर 1 included नहीं है. So we can consider either x cannot be equal to starting from 0 and less than 1. So 1, in this case 1 included है, इधर also 1 included है. So union 1 भी लेना है आपको. Because based on the greatest integer function, x cannot be equal to any value including 0, excluding 1. So that means 1 is possible. In cos inverse x, -1 to +1, including -1 and +1 included है.
तो दोनों केस में 1 इंक्लूडेड है, सो आंसर में भी आपको 1 को इंक्लूड करना है। वन मोर क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मोहम्मद भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 डोमेन करना है। सो इधर रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, इससे अच्छा रहेगा।